Types of business services. Now see here, first type is banking, second communication, third transport, fourth insurance, next one is warehousing. Okay, now see one by one. First one, that is banking. Okay, now see here about banking. The term bank comes from the French word that is the banco. Okay, the term bank comes from the French word that is the banco, which means bench. A bank is financial institution which deals with deposits and advances and other related service. अभी आपको तो पता है कि बैंक में क्या क्या होता है. ओके, यू कैन डिपॉजिट, यू कैन डू द एडवांसेस लाइक दिस. ओके, आप पैसे रख सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, and other facilities you can take here. Okay, now say it also helps to raise the standard of living of the people in general by providing loans for purchase of consumer durable goods, houses, car, etc. अभी यहाँ पे क्या बोला है, इट ऑल्सो हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बढ़ सकता है. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर पर्पज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, हाउसेस, कार, एटसेट्रा एटसेट्रा. Here definition is given. See here, bank is an establishment for custody of money which it pays out on customer's order. Okay, I repeat once again definition. Bank is an establishment for custody of money, custody of money which it pays out on customer's order. That is the definition of bank. Okay, now see here, types of banks. Okay, here 9 types is given. Number 1, central bank. Number 2, commercial bank. Number 3, cooperative bank. Number 4, development bank. Number 5, exchange bank. Number 6, regional rural bank. Number 7, savings bank. Number 8, investment bank. And last one, number 9, specialized bank. Okay, now see here one by one. First one is central bank. In India, the Reserve Bank of India, that is RBI, Reserve Bank of India, acts as a central bank, and this is the apex bank. Okay, here the central bank is the apex financial institution in banking industry in the country. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, see here once again, in India the Reserve Bank of India, that is RBI, acts as a central bank. Which one? Central bank, that is the RBI, Reserve Bank of India. The central bank is the apex financial institution in banking industry in the country. में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? Central bank, that is the RBI. See here, the RBI was established in 1935. Okay, it is established in 1935 under Reserve Bank of India Act 1934. Under Reserve Bank of India Act 1934. Okay, in 1949 the Banking Regulation Act was passed. क्या बोला है? 1949 में 49 में क्या हो गया? The Banking Regulation Act जो है वो पास हुआ है. Some functions of RBI are as follows. First one, money policy. Second, issues currency notes. Number 3, acts as a banker to the government. Number 4, acts as a banker's bank to commercial and other banks in India. Okay, these are the some functions of RBI. Second one, commercial bank. Second one, commercial bank. See here, commercial bank is the most important type of bank in every country. Okay, this is the very most important type of bank in every country. Which one? Commercial bank. The main activity of commercial banks is to accept deposits and grants loan, cash credit and overdraft. What is it? The main activity of commercial bank. Okay, commercial bank activity कौन कौन से? See here, to accept deposits and grant to loans, cash credit and overdrafts. Nowadays, some of the commercial banks are also providing housing loans. Okay, nowadays some of the commercial banks are also providing housing loan on a long term basis to individuals. ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हाउसिंग लोन भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं.
Which one? Commercial bank. Commercial banks are of three types, that is public sector, private sector and foreign banks. Okay, first one, public sector bank. Public sector bank. See here, public sector banks where majority of capital is held by government. अभी public sector, यहाँ पे public नाम है, इसलिए आपको समझ सकता है, आप समझ सकते हो यहाँ पे public sector banks where majority of capital is held by government. The banks which are controlled by Reserve Bank of India. अभी कंट्रोल कौन करेगा? Reserve Bank of India. They are nationalized bank. Okay. Example is given here. Bank of India, Dena Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, Union Bank, etc. These are the public sector banks. Second one, private sector banks. यहाँ पे क्या बोला है? Private sector banks means owner कौन रहेगा? Private individuals. See here, these banks are owned by private individuals. Okay, these banks are registered like limited company. क्या बोला यहाँ पे? These banks are registered like limited companies. Example is given here: HDFC Bank, Axis Bank, S Bank, etc. Next one, third, foreign banks. Foreign banks. See here, these banks operate in our country but have their headquarters in foreign country. अभी क्या बोला यहाँ पे? These banks operate in our country. Which one? Foreign banks, but their headquarters in foreign country. Example is given here. See, Citibank, American Express, Standard Chartered, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, that is HSBC. These are the examples of foreign banks. Now see here, third one, cooperative bank. Cooperative bank. See here, it is registered under the Cooperative Societies Act. क्या बोला पे? It is registered under the Cooperative Societies Act. The main objective of such bank is to give credit to economically backward people. क्या बोला यहाँ पे? The main objective of such banks, which one? Cooperative bank, is to give credit to economically backward people. These banks encourage saving habit among the villagers and give loans to low rate of interest. There are three types of cooperative bank. Okay, there are three types of cooperative bank at different levels. कितने टाइप है यहाँ पे? Three types. Now see here. A, primary credit societies. Primary credit societies. See here, these banks operate at village level. These banks operate क्या बोला यहाँ पे? Village level. These banks collects deposit from the members as well as non-members. यहाँ पे क्या बोला है? These banks collect deposit from the members as well as non-members. These banks provide short-term funds to members for the purpose of purchasing seed, fertilizers, etc. अभी आपको तो पता है seed, fertilizer कहाँ पे लगता है? जिनके पास खेत वगैरह होता है ना, उनके लिए होता है, खेती करने के लिए. The loan are payable in installments. The loan are payable in installments. They also get funds from the state cooperative bank and district cooperative bank for the purpose of lending. Okay, this is the primary credit societies. Now see B, district central cooperative bank. District central cooperative bank. See here, these banks operate at the district level. They are established to provide funds to the primary cooperative societies who do not have sufficient resources to grant advances to their members. Okay, I repeat once again, these banks operate at district level. Okay, district level पे operate होती है. They are established to provide funds to primary cooperative societies. ठीक है, किसके लिए बोला है यहाँ पे? To provide cooperative societies, primary, yeah, who do not have sufficient resources to grant advances to their members. अगर उनको ज़रूरत होगी तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या कर सकती है कि मदद ले सकती है. और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइमरी को फंड प्रोवाइड कर सकते हैं. दे आल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग. क्या बोला यहाँ पे? दे आल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग. अगर उनको लोन या पैसे कुछ कम गिरे तो कहाँ से वो ले सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक कहाँ से ले सकती है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ले सकती है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. See, state cooperative bank. State cooperative bank. These banks operate at the state level.
अभी नाम में वो बोला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. These banks operate at the state level. They provide funds to central cooperative bank and primary credit societies as required. यहाँ पे क्या बोला है? They provide funds to किस किस को फंड प्रोवाइड करते हो? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड. State cooperative banks also performs function of monitoring over district bank and credit cooperative societies. Okay, now see next one. Number 4, industrial development banks. Industrial development banks. See here, these are the financial institutions that provide medium and long-term funds to the business firm. अभी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये नाम दिया है, तो इसमें से आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ सकती है. ठीक है, ओके. These are the financial institutions that provide medium and long-term funds to the business firm. Example, Industrial Finance Corporation of India, that is IFCI. Industrial Finance Corporation of India. State Finance Corporation, SFC. Maharashtra State Finance Corporation, MSFC. MSFC. Maharashtra State Finance Corporation. Okay. Some functions of development bank are as follows. See, number 1, provision of medium and long term funds to business. क्या क्या फंक्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के? सी हियर, प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस. बिजनेस के लिए मीडियम, अदरवाइज यू कैन से लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, दे कैन प्रोवाइड. ओके. सेकंड वन, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. क्या बोले पे? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एट द टाइम ऑफ issuing shares, purchasing shares like this. Third one, purchase of debentures and bonds. Purchase of debentures and bonds. अगर आपको debentures या bond purchase करना है at that time. Okay. Next one. Number 5, exchange bank. Exchange banks. See here, exchange banks are mainly concerned with financing foreign trade. क्या बोला है? एक्सचेंज बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड. अगर फॉरेन ट्रेड होगा एट द टाइम आप यहाँ पे वो बैंक का यूज कर सकते हो. ठीक है. मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर रिमिटिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, हेल्पिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एट्सेट्रा. अभी आपको यहाँ पे पहले लाइन में बोला है एक्सचेंज बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड. अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है एट द टाइम, अगर फाइनेंस की आपके वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, ओके, तो आप यहाँ पे ये बैंक की हेल्प ले सकते हो. ठीक है. एग्जांपल इज गिवन, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेस बैंक इन यूके एट्सेट्रा. दिस आर द एक्सचेंज बैंक. नंबर 6, रीजनल एंड रूरल बैंक. रीजनल एंड रूरल बैंक. Regional rural banks, that is RRBS. RRBS, that is regional rural banks, were established in 1975. Established in 1975. These banks sponsored by large public sector banks. Okay. The capital of RRB, that is regional rural banks, is contributed by सेंट्रल गवर्नमेंट 50%. अभी कंट्रीब्यूशन देख लो यहाँ पे कैसा कैसा है. सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक 35%. ओके. दीज बैंक्स आर मेनली फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल सेक्टर. दीज बैंक्स आर मेनली फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल सेक्टर. रूरल बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स and small manufacturers in rural areas. We are talking about regional and rural bank. Okay. Now see here, rural bank provides financial facilities to small and marginal farmers, as well as small manufacturers in rural areas. Okay. See next one. Number 7, savings bank. Savings bank. See here, the main objective of saving bank is to encourage saving of the people,
स्पेशल इन रूरल एरियाज। अभी सेविंग बैंक, अभी सेविंग में आपको समझ में आ सकता है। अभी इससे क्या हो सकता है कि पीपल में जो भी लोग हो गए उनमें सेविंग हैबिट आप इंकरेज कर सकते हो। ओके, सी हियर, दिस बैंक एक्सेप्ट स्मॉल सेविंग फ्रॉम द पब्लिक हु हैव फिक्स इनकम। क्या बोलने पे, दिस दिस बैंक एक्सेप्ट स्मॉल सेविंग फ्रॉम पब्लिक हु हैव फिक्स इनकम, जिनका फिक्स इनकम है उससे क्या कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग। In India, post office, saving bank, commercial bank and cooperative banks are examples of saving bank. Okay, now take next one. Number 8, investment bank. Investment bank. See here, these banks provide financial and advisory assistance to their customers. क्या बोले यहाँ पे, these banks provide financial and advisory assistance to their customers. मैं सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियली और आपको कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दे कैन एडवाइज टू देयर कस्टमर्स। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी उनके क्लाइंट कहाँ से हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल, हाँ क्या बोला पे, देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Investment banks facilitate mergers and acquisitions by undertaking research and providing advice on investment decisions. Okay? Generally, investment banks do not directly deal with general public. अभी जनरल पब्लिक से डायरेक्टली वो डील कर सकते हैं क्या? नो। नेक्स्ट वन, नंबर 9, स्पेशलाइज्ड बैंक. नंबर 9, स्पेशलाइज्ड बैंक. See here, bank which are established by the government of India for separate functions of providing financial assistance to various sectors of the economy. अभी क्या बोला है, banks which are established by the government of India for separate function of providing financial assistance to various sectors of the economy. एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, एक्सिम बैंक, SIDBI एंड नाबार्ड. अभी वन बाय वन देखेंगे हम. नंबर 1, EXIM, that is Export Import Bank of India. EXIM, Export Import Bank of India. See here, for setting up business for exporting products or importing products from foreign countries for sale in our country. क्या बोले पे, for setting up business for exporting product, export करना है, और importing product, import करना है product, ठीक है, from foreign countries for sale in our country. Exim Bank can provide the required support and assistance. ठीक है. Second one, Small Industries Development Bank of India. Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI. SIDBI, Small Industries Development Bank of India. See here, Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, set up in 2nd April 1990. Set up in 2nd April 1990 under Act of Indian Parliament, acts as the principal financial institution for promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprise, that is MSME sector, as well as for coordination of functions of institutions engaged in similar activities. यहाँ पे क्या बोला है भाई, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कब हुए, 2nd April 1990. ओके, सी हियर, द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, ठीक है, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, देन स्मॉल medium enterprise, micro, small and medium enterprise sector, as well as for coordination of functions of institution engaged in similar activities. Similar activities में जो भी होंगे उनको, उनके लिए भी. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट, नंबर 3, दैट इज नाबार्ड. NABARD. ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, नाबार्ड. NABARD, नाबार्ड लॉन्ग फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. क्या बोला है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अभी आपको ये नाम पे से पता चल चुका होगा ये बैंक किस लिए होगी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सी हियर, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स. क्या बोला है पे, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर. अभी एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर के लिए ये Apex means topmost bank. Which one? NABARD. It is concerned with policy planning,
and operations relating to agricultural credit and credit for other activities in rural India. क्या बोले यहाँ पे? It is concerned with policy planning and operations relating to agricultural credit and credit for other activities in rural India. नाबार्ड प्रोवाइड शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. क्या बोला यहाँ पे? नाबार्ड प्रोवाइड शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्मर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. ठीक है, अभी क्या बोला यहाँ पे? नाबार्ड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, फार्मर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. ओके,